Now the second important topic today is Major Port Authorities Bill that has been passed. So what are the important points from this? Like Lok Sabha, the Parliament has now passed this Major Port Authorities Bill. What is the change that this bill is going to bring, and why was the kind of change needed, है ना? जब भी कोई act आता है, जब भी कोई law आता है, तो first of all we need to analyze as to why this change was needed, है ना? तो why the existing law failed to address the shortcomings, what are the shortcomings of the existing law, and what things that it failed to address, and has the new bill addressed those shortcomings or not? That is how we are going to analyze any law or bill that has been passed by the Parliament. So the first important point is the bill seeks to increase the power of individual ports. ठीक है? कैसे? We will analyze this point. The second one is seeks to attract private sector investment in the port sector. Okay. Although this has been going on since 1996-97, but now the government is trying to bring about a like phenomenal change in the kind of investment that private sector can bring into the port sector. ठीक है? And seeks to improve the port efficiency and hence revenue. Okay. There are a few facts about why the kind of port legislations are needed and why so many port laws are being drafted or brought. ठीक है? This actually bill was drafted in 2016 also. ठीक है? But it could not become a law then. 2016 में ही सागरमाला प्रोजेक्ट भी आया. ओके. उससे पहले 2013 में नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट पॉलिसी जो कि 2005 से चल रही थी. ओके. दैट वाज आल्सो रिन्यूड. 2005 से 2012 तक एक पॉलिसी थी, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट पॉलिसी. दैट पॉलिसी फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है? लाइक इंक्रीजिंग द कंटेनर स्पेस, ओके, एंड ड्रेजिंग ऑफ द पोर्ट्स. ठीक है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियाज रैंक इन इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट. ओके. द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ इंडिया इज logistics cost is around 11%, okay, of the product. That means 11% of the product value. And this major logistic cost is due to the port inefficiencies. ठीक है? दूसरी चीज, the containers in Indian ports take 1.5 times more time than the containers the time that is taken by containers in China. ठीक है? Similarly, Singapore is one of the biggest container hubs or port hubs in the whole Southeast Asian region. Okay, and it has a very high, it has very low logistic cost. Logistic cost का meaning क्या होता है? Logistic cost है point of origin से point of delivery के बीच में. अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उस सामान को ले जाने में जो खर्च आता है वही लॉजिस्टिक कॉस्ट है. इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अराउंड 11% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू, व्हाइल इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज अराउंड 3 to 5%. ओके. एंड फॉर इंडिया दिस अमाउंट्स टू no less than 2% of the GDP. Okay. Understood? That is why the government has been trying to consistently improve the port infrastructure and also develop the new infrastructure around the Indian coastline. ठीक है? Logistic Performance Index. There is one index that measures this logistic performance, that is called Logistic Performance Index. It is released by World Bank. India has secured 42nd position in the world. Okay. So India is having a poor performance in logistic handling या cargo handling. For that, port authorities में बहुत सारा reform has been going on through, like for past 10 to 15 years, a lot of reform has been going on. ठीक है? तो what? Let's deal with this issue. Need for reform is port-led development and creation of competitive ports in India. Okay, competitive ports. There are 12 major ports.
and around 200 minor ports. Major ports are under the government of India and minor ports are under the concurrent list. 7th schedule में minor ports are under concurrent list and major ports are under union list. Now what are major and minor ports? Under the Ports Act 1908, any port that the central government declares as a major port becomes a major port. Okay, all other ports are minor ports. Okay, तो और major ports 12 हैं और minor ports around 200 हैं. But most of the cargo that India handles is through major ports. India, okay, there are 12 major ports. The 13th one has been recently announced. That is Vadhvan Port. Vadhvan Port, ठीक है. Vadhvan Port is in Maharashtra, Dhanau के पास में, Maharashtra. Vadhvan Port. One important thing about this port is this is also under landlord port model. Landlord port model. ठीक है. Now what is this landlord port model? दो प्रकार के मॉडल्स हैं. अगर हम इसको ब्रीफ में समझना चाहें तो फर्स्ट वन इज सर्विस मॉडल, सर्विस पोर्ट मॉडल एंड द सेकंड वन इज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल. ठीक है. तो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल और सर्विस पोर्ट मॉडल में डिफरेंस क्या है? सर्विस पोर्ट मॉडल में जो पोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, जो पोर्ट अथॉरिटी है दैट विल बी providing all the services to the private. For example, there are ships, okay, there are containers. This is container yard, for example. There will be many kind of services that will be needed in this port. For example, container handling, ठीक है. उसके बाद कार्गो को स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होगी, है ना. उसके बाद तमाम चीजें. तो सर्विस पोर्ट मॉडल में all these services will be provided by the port authority. ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी. ओके, एंड इट बिहेव्स एज द ओनर ऑफ द पोर्ट. फाइन. सर्विसेज फॉर एग्जांपल, ऑल दीज द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द पोर्ट. ठीक है, जैसे कार्गो उठा के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे रखने वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे, वो सारे स्ट्रक्चर्स, सारा एसेट विल बी ओन्ड बाय द पोर्ट अथॉरिटी. ठीक है, एंड ऑल द काइंड ऑफ सर्विसेज that these private consumers need. ठीक है, तो these services will be provided by port authority. However, in landlord port model, the port authority behaves not as an owner but as a landlord. And landlord in the sense that the private companies, है ना, private companies can install their own superstructures over the existing structure. ठीक है. If they need some kind of expansion, they can make an expansion. If they need some kind of machinery, they can use their own machinery. ठीक है. तो the private companies invest here and develop the infrastructure. Fine. But the port authority, है ना, what port authority does is port authority behaves as a basic provider of the basic infrastructure. ठीक है, मतलब आपको लैंड डेवलप करके और पोर्ट डेवलप करके पोर्ट अथॉरिटी दे देगा. अगर आपको सुपर स्ट्रक्चर डेवलप करने हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो आप अपने मशीन्स यूज कर सकते हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो वहां पे, एंड यू विल बी शेयरिंग अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू विद द पोर्ट अथॉरिटी. सिमिलरली यहाँ पे सारी सर्विसेज भी पोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन दे विल बी शेयरिंग अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, आपको सर्विसेज और एक्टिविटीज सारी प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, बनाएंगी अपने हिसाब से, एंड देन दे विल बी शेयरिंग अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विद द पोर्ट अथॉरिटी. तो 13th मेजर पोर्ट इज वाधवान पोर्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज लाइक ऑथराइज्ड बाय द कैबिनेट लास्ट ईयर. ठीक है, तो ओके, एंड यू कैन सी दैट 58% ऑफ द सी बॉर्न कार्गो ट्रैफिक is being handled by the major ports. Okay, and maritime trade accounts for more than 90% of the trade that India makes. Okay, यानी 10% of the trade is done through land and air. The rest of the trade, export import, is done through maritime route. ठीक है, and 72% by value, by volume and by value.
मतलब अगर 10,000 करोड़ रुपीस का ट्रेड हो रहा है, अगर 10,000 करोड़ रुपीस का ट्रेड हो रहा है तो 90% सॉरी 7200 करोड़ रुपीस का ट्रेड सी रूट के थ्रू हो रहा है। ओके, व्हेन इट इज बाय वॉल्यूम, तो मान लो कि 100 मीट्रिक टन का है, अगर 100 मीट्रिक टन है ना, तो 100 मीट्रिक टन में से 90 मीट्रिक टन का जो ट्रेड हो रहा है वो सी रूट के थ्रू हो रहा है। 10 मीट्रिक टन का ट्रेड जो हो रहा है वो लैंड और एयर के थ्रू हो रहा है। as we have seen, logistic costs are very high, cargo handling costs are very high, and evacuation time is very high. Evacuation time means कार्गो जहां पे शिप से कार्गो अनलोड होके शिपयार्ड में जब आता है और वहां से जहां डिलीवरी पॉइंट है ना, वहां पे जाता है, उसको कहते हैं इवैक्यूएशन टाइम। तो द टाइम फॉर विच अ कार्गो इज सिटिंग इन द शिपयार्ड इज कॉल्ड evacuation time. If that is high, that will lead to increase in logistic cost because inventory का cost bear करना पड़ेगा कंपनी को। Okay, इसलिए evacuation time is very high. Evacuation time is actually, this is very important in the sense of logistics. इसलिए to increase what the private sector investment in port sector, the government is trying to bring about a law that seeks to provide more autonomy to the ports, individual ports. Okay, like these are the 12 major ports: Kandla, Mumbai, JNPT, Murmugao, New Mangalore, Cochin, Chennai, Ennore, Visakhapatnam, Paradeep and Kolkata. Okay, now as I told, Indian containers can take 1.5 times more time than Chinese containers, with the time being highly variable due to lack of automation of customs process. The second is lower speed of trucks and congestion and inefficiencies at ports. ठीक है, all these parameters या all these inefficiencies need to be removed. उसके लिए systematic development of port is required. ठीक है, a very मतलब very well planned port is required so that the placing of cargo, the evacuation of cargo and the customs time is reduced. Okay, that is the main aim of the of this bill. And now how this bill seeks to address this problem? By bringing about major changes and providing individual port authorities more powers. ठीक है, okay, let's see the evolution. 2005 से 2012 National Maritime Development Program, creation of infrastructure at major ports worth rupees 1 lakh crore. Now 2016 में सागरमाला project launched. ठीक है, draft Central Ports Authority Act 2016 prepared, but it never became the act. It was a draft authority act. 2018 में government allows private sector in existing ports. ठीक है, earlier the private sector investment was allowed for what? The greenfield ports, that is the newer ports. But in 2018 government allowed the private sector investment through PPP mode, public private partnership mode, into what? Existing ports, मतलब brownfield investment in PPP mode. More than 67 projects, this is very important, more than 67 projects at the cost of rupees 89,567 crore under PPP mode are already undergoing. That is, they are already operational at major ports. ठीक है, now 2020 में Vadhvan Port was finalized, was given the consent of the Cabinet Committee on Economic Affairs या Cabinet in 2020. This is based on landlord port model, and now Parliament passes the Major Authorities Port Bill. ठीक है, this is kind of the evolution that has taken place. Now what are the major features of the bill and how this bill seeks to address the issues or the challenges? ठीक है, the first one is tariff authority. ठीक है, there was a tariff authority which decided the tariffs. Tariff means the rate at which the private companies are going to pay to the port authorities. ठीक है, why? Because the private companies are going to use the infrastructure of the port authority, तो उस port authority को कुछ पैसे भी देंगे, जैसे we use the infrastructure of our telecom networks to make calls and we pay them some kind of money. ठीक है, similarly there was a tariff authority, that was a central tariff authority. It decided the kind of payments that the private companies will be making to the port authorities, or it also finalized the PPP mode, मतलब
Tariff authority was a central authority that oversaw what the PPP mode of प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. मतलब अगर कोई कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट लिमिटेड है, अगर उसको JNPT पोर्ट पे अपना एक कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी डेवलप करनी है, तो दे विल एंटर इनटू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एंड डेवलप सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट JNPT. Now who will be the negotiating authority from the port? That will be tariff authority. ठीक है, tariff authority was a central government authority. Okay. दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग पोर्ट्स का जो बिल था, द पोर्ट्स अथॉरिटी बिल, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, एग्जिस्टिंग जो एक्ट था, इट मेड पोर्ट अथॉरिटीज एज ट्रस्ट्स एंड नॉट एज कॉर्पोरेट बॉडीज. दिस एक्ट सीक्स टू मेक द पोर्ट अथॉरिटीज एज कॉर्पोरेट बॉडीज इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग, ओके, what are the aims of the law is it seeks to establish law for the regulation, operation, planning of the major ports. It seeks to replace the Major Port Trusts Act 1963. यहाँ पे एक important चीज है कि earlier the major ports were governed through, not through authority, through trusts. Like अगर हम बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है. ओके, सिमिलरली यहां पे पोर्ट अथॉरिटी, now the government has made the corporate bodies that were governing the ports as port authority. Earlier it were called port trust. ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट्स एंड नाउ दे हैव बीन मेड पोर्ट अथॉरिटीज. ठीक है, अर्लियर दे वर ट्रस्ट्स, नाउ दे हैव बीन मेड अ कॉर्पोरेट बॉडी. द मेजर पोर्ट ट्रस्ट विल नाउ बी रिप्लेस्ड विद मेजर पोर्ट अथॉरिटीज. अंडरस्टूड? दे आर, दैट इज द बेसिक एम ऑफ द एक्ट. ठीक है, बट व्हाट आर द मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड? नाउ इट सीक्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड. ठीक है, तो होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल JNPT पोर्ट है ये, तो JNPT पोर्ट छोटी मोटी चीज नहीं हो रही है ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग कॉर्पोरेट एंटिटी इन इटसेल्फ. तो अब इसको गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बनाया. उस बोर्ड का चेयर एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी. ठीक है, ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी हैव नॉट येट बीन डिटेल्ड, बट स्टिल देयर विल बी अ सिलेक्शन कमिटी एंड व्हिच विल रेफर द chairperson, the vice chairperson of the major port authorities. One person each from state government, Ministry of Railways, Ministry of Defense and Customs Department. Okay, one person from each, from the state government of which the port is present. For example, JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust is present in Mumbai, Kandla in Gujarat. तो अगर कांडला पोर्ट के लिए कांडला पोर्ट अथॉरिटी बनेगी, तो एक मेंबर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. ठीक है, टू एंश्योर द फेडरलिज्म ऑफ कोर्स. एक मेंबर अपॉइंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक मेंबर अपॉइंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. रेलवेज क्यों? क्योंकि रेलवेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पोर्ट इवैक्यूएशन. ठीक है, क्योंकि रेलवेज एंड ऑफ कोर्स रोड्स, दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द कार्गो. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कस्टम्स डिपार्टमेंट. ओके, 2-4 independent members, they will be appointed by again central government. Independent members, ठीक है, they are similar to the independent members of the corporate boards as recommended by Kotak Mahindra committee. Okay, 2 member representatives employees. अब उस पोर्ट ट्रस्ट के उस पोर्ट अथॉरिटी पोर्ट पे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, वहां पे हो सकता है वर्कर यूनियन हो. अब वो यूनियन अपने 2 मेंबर अपॉइंट करेगी टू बी प्रेजेंट इन द बोर्ड. ओके, टू रिप्रेजेंट देयर राइट्स. 1 member not below the rank of director. ठीक है, when you become an IAS, ठीक है, आप अगर इंडियन गवर्नमेंट में IAS बनते हो तो आपको बहुत सारी पोस्ट मिल सकती हैं. ठीक है, तो आपकी पोस्ट का जो डेजिग्नेशन होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना. अगर इन केस यू आर नॉट बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ओके, यू आर, फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग फॉर सम सेक्रेटेरियल पोजीशन, or you are going for, if you are allotted the allied services in railways, for example,
तो you will be, your designation will be assistant director. Assistant director के ऊपर director होता है. Okay, तो one member not below the rank of director to be appointed by the central government. Okay, मतलब 1 IAS. Understood? पानी देना था. Okay. Now, what are the powers of the board? Powers of the board can use the property, asset and funds as it deems fit for the development of the port. Okay. Powers of the board में क्या होगा? The board can declare, can use the property, asset or the funds as it seems for the development of the port. That means high devolution of powers. ठीक है? Devolution of powers. Okay, can declare the port assets for port related activities and services. Okay, it can, the port authority, the board can declare any asset of the port. Okay, can declare any asset of the port to be used for activities and services at the port. Okay, develop infra facilities such as new ports and jetties to enter contract planning. Now, the authority that will be entering into any kind of contract, important thing is all this can be read. What is the important thing? Earlier it was a trust. Okay, now it is an authority. Okay, now it actually functions like a corporate body. ठीक है, corporate body which seeks to maximize the profit. ट्रस्ट का काम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है. अथॉरिटी का काम, जो कि कॉर्पोरेट बॉडी की तरह बिहेव करेगी, काम ही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. अंडरस्टूड? तो टू रिड्यूस द इनएफिशिएंसीज ऑफ द इंडियन पोर्ट्स एंड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, हेंस द ट्रस्ट हैज नाउ बिकम एन अथॉरिटी. Another important change that has been made is adjudicating authority. ठीक है, adjudicating authority has replaced the tariff authority under 1963 Act. 1963 Act जो था ports का, the Major Port Trusts Act 1963, it made one port trust for every port. ठीक है, like कांडला पोर्ट के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट होगा under the 1963 Act. Similarly, JNPT पोर्ट के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट होगा under the 1963 Act. बट इन सारे पोर्ट ट्रस्ट्स के बाद एक होता था what? टैरिफ अथॉरिटी. ठीक है, टैरिफ अथॉरिटी. टैरिफ अथॉरिटी, although all the ports were independent, है ना, all the port trusts were also independent, but tariff authority was a central government body which decided the tariffs, है ना, of services and okay that these ports provided. Okay, although the tariff was different for every port, but now what has happened is all the ports will be having their own adjudicating authority. ठीक है, adjudicating authority will not be one body. It will have what? All the ports will have individual adjudicating authorities, and adjudicating authority will replace the tariff authority. That is, the tariffs will now be determined by adjudicating authority. Okay, and also it will sit upon the adjudication of disputes or claims or rights or privileges. ठीक है, अगर कोई dispute होगा तो adjudication वहीं पे हो जाएगा port authority के अंडर में. The another important thing is reviewing the stressed PPP projects. Stressed PPP projects मतलब वो public private partnership में जो projects जो कि fruitful नहीं हो पाए, उनका review करके if they are viable economically, तो viability gap funding provide करके, maybe एक special purpose vehicle बना के एक viability gap funding provide करके उस project को complete करेंगे, या तो उस project को completely abandon करना है कि नहीं, that review will now be done by the adjudicating authority. Okay, earlier it was done by the central government. Okay, now this power has been transferred to the individual port authorities. Understood? That is why it is a very progressive law in the sense that it provides for devolution of power.
but there has also been a criticism that again the ports are now being tried to privatize. ठीक है, but the government has said that the authority will be a government body. So how is the port going to be privatized? The government's aim is to monetize the public assets. Okay, as we have seen in the budget declaration also, the government has tried to monetize the public assets. So government is trying to reduce its control over, sorry, what the government is trying to do, what the government is trying to do is it is trying to reduce its own control. ठीक है, reduce its control over the port. ठीक है, control over the ports, reduce, इसको reduce करना है. ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है. ठीक है, so that the Indian ports, out of 12 Indian ports, 12 major ports and 200 minor ports in India, none of the port has figured in the top 50 ports of the world. ठीक है, and that presents us with a huge opportunity. ठीक है, तो उसके लिए a major ports authority bill is one of the kind of a very remarkable step in that direction to increasing the efficiencies of the ports. ठीक है, understood?